like to ask about the Buddha Gaya Temple Management Committee. Now is under control of the Bihar government, and there is a majority of the non-Buddhist. So please say some words on the issue of the BTMC. Now All India Buddhist Forum is working for the movement take back under the control of Buddhists. So please say your words. Thank you, Mante. That the Bodh temple, which belongs to the Buddhists and which is their highest ideal, is unfortunately fallen into the hands of non-Buddhists due to some historical reasons. But now that there are Buddhists in India, and for their religious practice, they have the right to own the old Buddhist shrines, their venerable objects, so that they can give justice to their own life in following the Buddha's teaching. It is the injustice that creates trouble in the world. And the whole world today is now committed to the world peace. In this context, if the Buddhist temple at Bodh Gaya remains in the hands of non-Buddhists, that amounts to a great injustice committed to millions of Buddhist followers throughout the world. And because the Jug wants peace, the world peace, and therefore one has to do away with all kind of injustice, I think it is but natural on the part of Indian people and Indian government that the management of Buddhist temple at Bodh Gaya should be handed over to the Buddhists. It is their ethical right, their fundamental right, and that is the cause of justice. So, in order to pursue this claim, all Buddhists belonging to different traditions will have to come together and pursue this goal, reminding the government of India, reminding the people of India to do justice with them. And I would rather say that we'll have to even go further and appeal to the people, Buddhist people throughout the world, to approach government of India and request them, ask them to consider this claim of Buddhists to own their own religious places and do the justice. Because India is also a leading country insofar as peace in the world is to be preserved, it is their bounden duty, universal duty, to contribute to the act of peace by doing justice to the Buddhists living in India and Buddhists throughout the world. So I think all people throughout the world, no matter what religion they belong, they must stand for the justice, support this cause, and request government of India, request the people of India to follow suit and establish justice in this land and hand over
the Buddhist temple fully in custody of Buddhists living in India today. I think this is very important issue, and it belongs not only to Buddhists now, but it belongs to the whole world, and whole world has to speak in one voice that justice should prevail so that the world peace is maintained. So thank you very much. Yeah. Please, your introduction. Hindi. Introduction, few words. My name is Bhadanta Vimalakiti Gunasiri. I was ordained in Thailand and working in India, especially helping Buddhist monks, nuns, and layperson to commit to Buddhism properly and also acquire the skills for propagating the Dhamma in India, because the situation in India is very adverse. And skilled people, skilled preachers are necessary to advance the propagation of Buddhism in India. And that is the kind of work I am doing. I have established a seminary which was the basic idea of Dr. Baba Ambedkar, where the religious preachers to be trained. So that kind of seminary I have established at Karza. Earlier it was established in 2600 at Nagpur, but I had to now shift over to the Karza. Thank you, Bante. बुद्ध गया मंदिर जो कि बौद्धों का सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ श्रद्धा स्थान है, वो उनके कब्जे में न होकर जो बुद्धिस्ट नहीं हैं उनके कब्जे में हैं, ये बहुत ही दुखदायी बात है। और विश्व का न्याय है, जहाँ अन्याय होता है वहाँ शांति नष्ट हो जाती है। तो करोड़ों बौद्धों के प्रति उनका श्रद्धा स्थान उनके हाथों में न होना ये एक सबसे बड़ा अन्याय है, और इसलिए विश्व शांति को बाधा डालने वाला है। हमें सभी बौद्धों को, चाहे हम किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, क्योंकि अपना श्रद्धा स्थान एक ही है, ये समझकर बड़े दृढ़ता से एकतापूर्वक भारत सरकार की तरफ विनती करें, उनसे कहें कि भाई हमें न्याय दो, न्याय प्रस्थापित करो। विश्व की न्याय प्रक्रिया में, शांति प्रक्रिया में भारत का अपना महत्व है, और विश्व के करोड़ों बौद्धों के मन में उनके श्रद्धा स्थान को उनके हाथों से छीनकर जिस तरह से अन्यायग्रस्त किया गया है, उससे निपटना ये भारतवासियों की जिम्मेदारी, भारत देश की जिम्मेदारी है, और न्याय प्रस्थापित करना ये उनका कर्तव्य है, जिससे विश्व शांति को योगदान मिलेगा। तो मैं सभी बौद्धों से, संप्रदाय तो आए हैं सभी, लेकिन विश्व भर में सभी बौद्ध हैं, उनसे भी विनती करूँगा कि उन्होंने भारत सरकार से ये कहना चाहिए कि भाई आप ये न्याय प्रस्थापित करते हुए विश्व शांति को बढ़ावा दें। विश्व शांति को बढ़ावा देना ये हर इंसान का कर्तव्य होने के कारण मैं आगे चलकर ये भी कहूँगा कि विश्व के सभी धर्म, जाति, वर्ग के सभी किस्म के जो लोग हैं, वे इस तरह से इस न्याय की भाषा को आगे बढ़ाएं, और भारतीय जनता को, भारत की सरकार को विनती करें, उनसे कहें कि कृपया बौद्धों को न्याय देकर आप शांति में योगदान दीजिए, तो विश्व शांति इससे कायम हो जाएगी। बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ओके, भंते जी आपका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देंगे? मेरा नाम भदंत विमल कीर्ति गुणाश्री है। मैं थाईलैंड में प्रवचित हुआ हूँ।
और भारत पे काम कर रहा हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि धर्म प्रचार के लिए सक्षम भिक्षुओं का, प्रचारकों का होना जरूरी है, और इसलिए वो 1954 से ही बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण करना चाहते थे। उनके जीवन काल में वो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने प्रयास तो जरूर किए थे। तो इसी प्रकार के कर्तव्य को मद्देनजर रखते हुए मैंने बुद्धिस्ट सेमिनरी करजत में चलाई है, जहाँ भिक्षु, भिक्षुनियाँ और उपासकों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि धम्म का प्रसार कैसे करें, वो कला जो है कैसे अपनाएं, क्योंकि धम्म का प्रचार प्रसार किए बगैर तो बुद्ध धर्म का विकास होने वाला नहीं है। और ये कौशल हर आदमी के पास कम से कम जो प्रचार प्रसार करना चाहते हैं उनके पास तो होना जरूरी है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम करजत में, जो मुंबई के करीब है, सेमिनरी चला रहे हैं। ये सेमिनरी पहले मैंने 2006 साल में नागपुर में चलाई थी, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ से हमें करजत शिफ्ट होना पड़ा है, तो यहाँ पर ये सेमिनरी चल रही है। ठीक है, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत